Namaskar and a very good morning. Welcome to the audiocast from Kotak Securities. I'm your host and guide Anindya Banerjee. अगर डॉलर रुपी refused to go up when equity was weak and dollar index was surging up, तो डॉलर रुपी का क्या हासिल होने वाला है जब डॉलर इंडेक्स sees a technical decline, oil prices go further down and equities bounce back. Yes, that is what looks like to be the case over the next couple of days. क्योंकि dollar index looks overbought, तो एक correction is expected. And अगर ये correction play out होता है, that can have a negative impact on dollar rupee. उसके साथ oil prices looks like to have topped out. It made almost a double top at around 87 levels. Brent का बात कर रहे हैं. Which was a 2018 high और वहाँ से ये it's declining. There is a possibility if this momentum downward momentum continues तो 73 72 के तरफ भी Brent जा सकता है, which means it's another negative for dollar rupee. So things are going to become very interesting now because unless equity markets can sell off big globally and domestically triggering outflows, RBI has to be really active क्योंकि dollar rupee may see more selling from speculators who will try to push it towards the 73.90 mark, which is a major support level on the November futures. फिलहाल के लिए अगर हम लोग ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का accumulation देखें जो 74 के आसपास heavy है on the puts and 74.50 के आसपास on the calls, it looks like, and plus we consider the charts, so it looks like कि 73.90 से 74.50 का फिलहाल का एक range है on the November futures. तो how to play it? Because एक bias is slightly downward within this range bound market. तो if you are using futures, तो best trade रहेगा to sell on rise. Stop loss रहेगा 74.50 के ऊपर on a daily closing basis. और 73.90 74 के आसपास क्योंकि मेजर सपोर्ट एरिया है तो वहाँ पे यू कैन कवर योर शॉट्स. बट इन केस जस्ट इन केस ये 73.90 के नीचे ट्रेड करता है विथ वॉल्यूम्स, देन इट कैन बी अ मेजर ब्रेक डाउन जो 73.40 की तरफ भी लेके जा सकता है. बट फिलहाल के लिए वी कैन इग्नोर दैट पार्ट एंड फोकस ऑन दिस रेंज ऑफ 73.90 74 to 74.50 विच इज़ द रेंज. तो जब तक ये रेंज इंटैक्ट है ऑप्शंस का भी ट्रेड बनता है. सो यू कैन इवन सेल अ स्ट्रैंगल November 26 expiry which is 74 and 74.50. But do not forget, in case अगर ये breakdown देता है तो you should be exiting out of that trade. But till that this range holds, you can definitely do the 74 and 74.50 strangle short. International currencies में Euro INR is looking oversold after a sharp decline of almost 3 rupees over the past couple of weeks. तो एक bounce तो expected है, but if dollar rupee continues to slide, it will be difficult for euro to bounce too much. So Euro INR में view is still that sell on rise. Same goes for yen INR. GBP INR quite expectedly we have been expecting that GBP INR will do far better than Euro INR. That's exactly is playing out क्योंकि यूके का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो कोविड सिचुएशन है, जो इन्फ्लेशन सिनारियो है, ऑल एंड प्लस जो सेंट्रल बैंक का स्टांस है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री इज मच बेटर देन व्हाट इज द सिचुएशन इन यूरोजोन. इसके कारण जीबीपी में कंटिन्यू टू डू वेल अगेंस्ट द यूरो. हाँ, जीबीपी में एक रिस्क है जो फिलहाल के लिए तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट समथिंग विच वी नीड टू कीप एन आई ऑन मे बिकम इम्पॉर्टेंट इन द कमिंग मंथ्स. वो है कि दिस नेगोशिएशन बिटवीन UK and European Union on the trade deal, but there are areas of friction which can flare up, but फिलहाल के लिए that's not important. Just मैंने ये mention किया that you are aware ये एक problem area future में बन सकता है. फिलहाल के लिए pound looks much solid than euro. So if Euro INR sees a bounce, Pound INR can do much better than that. So GBP INR I'll be inclined to buy on dips. Euro INR I'll be inclined to sell on rise. Before I conclude, I would like to remind you that हम लोगों का जो Telegram channel है that is very informative, and if you are
not already subscribed, kindly do so, because आपको सिर्फ ट्रेडिंग कॉल्स ही नहीं, आपको बहुत सारे insights मिलेगा जो which you can utilize to trade well in the currency market. So that's it, folks. This is Anindya Banerjee signing off. Have a fantastic day ahead.